Good morning, everyone. Our today's topic of discussion is algae. So, our today's learning objectives are: today we will discuss about algae, general introduction of algae. Then, secondly, we will discuss about ecology and distribution of algae. That is classification of algae on the basis of its habitat. Habitat के बेस पे हम algae को classify करेंगे. So let's start. Firstly, algae. So जो एल्गी है उसमें आते हैं हमारे पास कुछ एक साइनोबैक्टीरियाज जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. और इसके अलावा आते हैं उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर emission of approximately 90% of oxygen. So mostly they are autotrophic, mixotrophic भी है. So algae includes prokaryotic organisms. इसमें आते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी. फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक है, एनाबीना है, एट्सेट्रा. इसके अलावा इसमें आते हैं यूकैरियोटिक एल्गी भी, यूकैरियोटिक सेल्स भी. सो जो एल्गी है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल ग्रुप, इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. और इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है दैट इज़ थैलॉइड. दिस वर्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. थैलॉइड मीन्स अ बॉडी विच इज़ नॉट truly differentiated into true leaf, stem or root. So these are very simple organisms. Firstly, the term algae was coined by Carolus Linnaeus in 1753. Mostly algae are autotrophic, means they can synthesize their own food, but कुछ एक algae mixotrophic और mesotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. माइजोट्रॉपिक में जो एल्गी है विच बियर सम स्पेशल सकिंग स्ट्रक्चर्स विद दैट हेल्प्स इन फीडिंग. एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी भी बोलते हैं और एल्गोलॉजी भी बोलते हैं. सो फाइकोलॉजी में फाइकोस का मतलब होता है सीवीड और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स और स्टडी. सो सीवीड्स की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं और एल्गोलॉजी. फादर ऑफ एल्गोलॉजी है एफ.ई. फ्रिश. अगर हम इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी की बात करें तो वो हैं M.O.P. इयंगर, प्रोफेसर M.O.P. इयंगर. और M.O.P. स्टैंड्स फॉर मंडायम ओसूरी पार्थसारथी इयंगर, एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी. ही डिस्कवर्स द टेरेस्ट्रियल एल्गा Frischella tuberosa. He was the person who get the credit of discovering or observing this algae, Frischella tuberosa. Next, ecological distribution. Mostly जो algae होती है they are aquatic. It means कि वो water में रहती है. अब aquatic में भी दो तरह के habitats आते हैं. एक है fresh water, दूसरा है marine water. Fresh water means जो हमारा flowing water है, जैसे rivers का है, streams का है, ponds है, lakes हैं, they are all fresh water bodies. While the ocean and sea, they contain salt water. That water is known as marine water. So mostly they are aquatic, but there are some algae which can survive in land also. So they are ubiquitous in this distribution. They are found everywhere. They are ubiquitous in the distribution. हर जगह पाए जाते हैं ये अर्थ के. In extreme habitats also, जैसे बैक्टीरियाज के बारे में हमने पढ़ा था, सेम वे जो एल्गी है वो भी डाइवर्स हैबिटेट में पाई जाती है. सो दे आर यूबिक्विटस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम क्लासीफाई करें एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सो दीज आर फर्स्टली एक्वेटिक, मीन्स वाटर में रहती है. देन टेरेस्ट्रियल एल्गी विच ग्रोज ऑन लैंड सरफेस, सॉइल सरफेस. Then parasitic, which grows on other living organisms. Symbiotic, it means it grows in association with other plants. Then algae with some special habitats. So these are the
these are the types of algae on the basis of their habit. So firstly, aquatic means they grow in water. So aquatic algae, most of the algae are aquatic, found in freshwater bodies में आते हैं हमारे पास lakes, ponds, rivers, ditches, tanks, streams, etc. और sea water, that is marine water, salt water environment. So ऐसी algae जो इस habitat में grow करती है, इन habitats में grow करती है, उसको हम बोलते हैं aquatic algae. Next, अब जो water body है, there are some algae which grows at the bottom or base of that water body, and those bottom dwelling organism, irrespective of plant or animal, कोई भी organism which grows at the base of that water body, उसको कहा जाता है benthos. These are commonly known as benthos. But when we consider only plants or algae which grows at the bottom of water body, so उसको हम बोलेंगे benthophytes. So phyte term is related to plant, और उसको हम बेंथिक एल्गी बोलते हैं. और बेंथोस में सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं विच आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर सम एल्गी विच मे बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी. ऐसा नहीं है कि सभी एल्गी बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी के में प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सम एल्गी विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज. उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स. These are basically extremely small microscopic algae, and they don't have any locomotory organs, so they move on the mercy of water current. So ऐसे जो algae है, algal forms है, उनको बोलते हैं phytoplanktons. They are free floating on the surface of. जो phytoplanktonic algae है उसको euplankton भी बोलते हैं. इसमें जैसे एग्जांपल है हमारे पास Chlamydomonas. This is a unicellular green algae which is motile. Then Cosmerium sanidesmus. इसके अलावा कुछ एक हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है like Microcystis. तो वो जो एल्गी है they forms this phytoplanktonic algae. If they are free floating, अगर phytoplanktons जो है free floating है from the beginning, initial stage से ही they are free floating, तो उसको बोलते हैं हम Tychoplanktons. उनको कहा जाता है Tychoplanktons. For example, Cladophora, Oregonium, and Zygnema. Sometimes planktonic algae show extensive growth in the water bodies and impart greenish color to the water body. This is known as water bloom or algal bloom. You can see this picture. कई बार जो वाटर सरफेस है उस पर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाता है. सो दिस एल्गी ग्रोज एक्सटेंसिवली ऑन द वाटर सरफेस, जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है. एंड इट इज़ डिजास्ट्रस टू द अदर एक्वाटिक एनिमल्स, जिसकी वजह से जो नीचे वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे आर अनेबल टू गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड इट लीड्स टू death of living organism. We can see here the dead fish here. So this is known as water blooms, the extensive growth of algae on the surface of water body. So the color of that water body also changes with the growth of algae. So example is Chlamydomonas, Chlorella, Sanidesmus, Microcystis, etc. So these are the algae which are responsible for this water bloom. Next, we have some freshwater forms. Means they are found in lakes, streams, ditches, or ponds. The examples are Volvox. This is a green algae. You can see here. This is the picture of Volvox. This is a colonial form, circular ball-like structure. Then Hydrodictyon. It is also known as water net. इसको water net भी कहा जाता है. This is a non-motile colonial algae. Then we have Chlamydomonas. This is a single-celled motile green algae. So these are some forms which grows in stagnant water. Stagnant means ऐसा पानी जो move नहीं करता है. Stagnant water like that of pond water. So these are some water forms, freshwater forms of algae. Next, the other forms are Cladophora, Oregonium, Ulothrix,
These prefer to grow in running water. So these are the algae which grows in running water. So ये example है Cladophora है, Oedogonium है, Yellowthrix है. They prefer to grow in running water. So on the basis of this stagnant water and running water, we use some terms. So the algae which grows in running water, अगर कोई algae running water में grow करती है उसको कहा जाता है lotic algae. So this is the term which is used for algae which grows in running water. While जो algae grow करती है stagnant water में उसको कहा जाता है lentic algae. So these are two important terms which are used on the basis of movement of water. Next, kelps. These are the giant algae, algal forms जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में. And they can reach up to 70 meters in their length. For example, we have a brown algae. एक brown algae है हमारे पास, तो उसका नाम है Macrocystis pyrifera. So it can grow up to 70 meter in length. Freshwater planktonic algae. So freshwater planktonic algae में example है हमारे पास Chlorella है, Chlamydomonas है, Sanidesmus है, Volvox है, Eudorina है, Microcystis है, Oscillatoria. So these are some examples of freshwater planktonic algae. Then we have freshwater benthic algae, which means ये हैं bottom dwelling algae जो कि bottom में होती है. This is the picture which shows, these both picture shows the bottom dwelling algal forms जो कि वाटर बॉडी के बेस में ग्रो कर रही हैं. सो इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास कारा, क्लेडोफोरा, पॉडानेला, क्लोरोक्लेडिया. जो कारा और क्लेडोफोरा है, these are the member of green algae, chlorophyceae. Bordanella and Pleurochlaria, these are the example of Phaeophyceae. Phaeophyceae is a class of algae which is brown in color. Then we have one other form, that is Batrachospermum. It is the member of Rhodophyceae, red algae. So ये जो forms है, they are the bottom dwelling algae which are found in freshwater bodies. Next we have marine planktonic. इसमें आता है हमारे पास Chlamydomonas की कुछ species, Cyclotella and Trichodesmium. So these are some forms of algae which are found in marine planktonic form. Next we have marine benthic form. So इसमें आता है हमारे पास, this is a Acetabularia, Caulerpa and Ulva. So these are the member of green algae which are found in salt water. So ऐसी green algal form जो कि salt water में पाई जाती है, these are some examples, and they are benthic, they are bottom dwelling. Then we have Ectocarpus, Fucus, Laminaria and Sargassum. ये जो algal forms हैं, these are member of brown algae. Then we have Chondrus, Galidium, Polysiphonia, Porphyra. So these are member of red algae. So these all are benthic, but in addition to benthic, they are marine. So they are found in marine water. Then next we have terrestrial algae or edapophytes. So ये ऐसी algae है which grows on the soil surface और soil के ऊपर grow करती है या फिर rock surface पे के ऊपर grow करती है. So these are terrestrial algae. We can see here, these are the bricks जिसके ऊपर ये algae grow कर रही है, these green color patches. So grows on or inside the moist soil. For example, Vaucheria है, Botridium है, Oedogonium है, Frischella है. So these are some algal forms which grows on the surface of soil. So ऐसी algae which grows on surface of soil उसको हम saprophyte भी बोलते हैं, saprophytes. Then there are few species like Anabaena, Nostoc, ये हैं blue green algae, cyanobacteria भी बोलते हैं इनको. They grows inside the soil surface. So these are commonly known as cryptophytes. So we have some terms. One is cryptophyte, other is cryophytes. Cryptos means hidden. So these are the algal forms which are hidden in soil. Phytes means plant. So example is Anabaena, Nostoc. Cryophytes means algal forms or plants, you can say plants which grows in extremely cold condition. So next is parasitic algae. So parasitic algae are the algal form which grows on the as a parasite on other plants and cause diseases. For example, this is the example of an algal form which causes red rusting tea leaves. So this is Cephalurose virescens. ये एक algae है. This is a green algae which causes disease in
tea leaves. So it grows on some plant and causes plant disease. For example, Cephalurose virescens. It is a parasite on tea leaves and causes red rust disease in tea leaf. Next, we have some special habitats. स्पेशल हैबिटेट में हमारे पास जो पहला हैबिटेट है वो है हैबिटेट के बेस पे जो एल्गी है उसका नाम है थर्मल एल्गी. So these are algae which grows in extremely high temperature conditions. So hot water spring में पाई जाती हैं ये algae. Grows in hot water spring. So hot water spring में ये algae grow करती है जहाँ पे टेम्परेचर की रेंज रहती है 65 to 85 डिग्री सेल्सियस. और इसमें जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास these are blue green algae, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है. एग्जांपल्स आर मेस्टियोक्लाइडस, फॉर्मिडियम एंड ऑसिलेटोरिया ब्रेविस एटसेट्रा. Next we have cryophytes. So this is the term cryophytes. Cryophytes are जो algae हैं, ये जो algae हैं देखो in extremely cold conditions, जो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है. For example in polar regions. So these grow in polar regions on ice and snow. Snow के ऊपर grow करता है. For example, examples are Chlamydomonas species and Scottiella. These are among green algae. And nostoc and nostoc is among blue green algae. So these are some examples. इसके अलावा हमारे पास एक algae है that is Hematococcus nivalis. It causes red snowball in alpine region. We can see here this is the reddish color in or pinkish color in on the snow. This is due to growth of these algal forms. Then we have Encyclonema Nordenscioloides. It imparts brown color in snow. So these are some algal forms which are found in extremely cold and wet. The next we have epiphytes. Epi means upon, phytes means plants. So algal form which grows on plants. So algal form which grows on the surface of plant parts इसको बोलते हैं epiphytes. For example, we have Oregonium and Eleutheryx. Next, there are algal forms Coleochaete. Coleochaete Netellarum grows on Netella. Netella is a benthic algae. So it grows on this algal form and Cara or Chara. इसके अलावा वी हैव अदर एल्गल फॉर्म, उसका नाम है ट्रेंटिफोलिया और रोडोकाइट्रियम. ये ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंजियोस्पर्मिक लीव्स. सो ट्रेंटिफोलिया और रोडोकाइट्रियम ग्रो करता है एंजियोस्पर्म्स के लीव्स के ऊपर और इसको कहा जाता है एपीफिलोफाइट्स. ऐसे प्लांट्स विच ऐसी एल्गल फॉर्म जो ग्रो करती हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर उनको कहा जाता है एपीफिलोफाइट्स. Some algal forms such as Plerococcus grows on the bark of the tree. इसको कहा जाता है epiphyllophytes. Phloem से related term है. Then next we have endophytic algae. So we can see here this is the picture of epiphytic algae. So this is a plant surface के ऊपर other algal form grow करती है. So इसको बोलते हैं हम epiphytic. And next we have endophytic algae. Endophytic means ऐसी algal form which grows inside the plant body. You can see here this is the picture. This arrow indicates the endophytic algae. Grows within the tissue of other plants. For example, we have nostoc which grows inside the thalli of Anthoceros. The next epizoic. Epi means upon, zoic means animal. So ऐसे algae which grows on the surface of animals को बोलते हैं epizoic animal algae. So इसमें example है हमारे पास Cladophora which grows on snail, Cyanoderma red algae है, and Trichophilus है green algae on the scales or outer hairs of sloth के hairs के ऊपर grow करते हैं. Next picture we have in next slide we have this is the picture. You can see here green patches. So this is the parasitic algae which grows on the surface of animal body. And next we have endozoic algae. Endozoic algae means which grows inside the living organism. So we can see here this is green color hydra. So इसमें जो ये algae है this is chlorella. So ये algae इसके अंदर grow करती है. So growing inside the animal, for example, chlorella within the tissue of hydra and sponges. The next lithophilic algae. Lithos means rock. So ऐसी algae which grows on the surface of rocks उसको बोलते हैं हम lithophilic algae. Examples are Polysiphonia and Ectocarpus. Then other algal forms. इसमें आता है हमारे पास algae like Dinaliella, Chlamydomonas,
Tranbergae, ये जो एल्गी है ग्रोज इन वाटर विद हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन है उसमें ग्रो करती है. वी हैव एग्जांपल हेलोफिलिक एल्गी and Frischella, which grows on acidic soil, while oscillatoria species or nostoc, etc., which grows on the alkaline soil. So this is all about today's this discussion. Thank you. Have a nice day.